दोस्तों, म्यांमार अर्थक्वेक का अब 3 दिन हो चुका है और बस इन 3 दिनों में 1700 लोगों की जान जा चुकी है और करीब करीब 4000 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रही है दिन रात वहाँ, और रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं।这个是汉人学校，小娃还读书呢。挺好，都害怕死了。学生们都是软的。आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है दुसुपी सीरियस और आज हम बात करेंगे म्यांमार थाईलैंड में जो अर्थक्वेक आया 3 दिन पहले उसके बारे, और क्या नॉर्थ ईस्ट खासकर अरुणाचल में भी इस तरह की स्थिति भविष्य में आ सकती है। On 20th March, an earthquake of magnitude 7.7 hits Myanmar with epicenter at about 16 km away from Sagaing, a city in Myanmar which is near the second largest city of Myanmar, Mandalay, with somewhat densely populated area with lots of concrete structures and high-rise buildings. Initially, the death tolls were estimated at about hundreds, but within a span of 24 hours, the total amount of death has soared to 1700 and counting. United States Geological Survey of Earthquake Hazards Program said on Friday that the fatalities could be between 10,000 to 1 lakh people in coming days, and the economic impact could be as high as 70% of Myanmar's GDP. Myanmar, whose economy has been struggling with civil war, is bound for dire consequences due to the destruction caused by the earthquake. Mà chiếu chiếu दोस्तों, म्यांमार जो है ये बिल्कुल इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पे है। दोनों प्लेट नॉर्थ से लेकर साउथ पूरे देश से गुजरता है और उस वजह से भूकंप का खतरा म्यांमार में हमेशा रहता है। अर्थक्वेक को समझने के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस ज़मीन में रहते हैं उसके नीचे बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कॉन्टिनेंट साइज़ के, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स। जो आप आज हिमालय के पर्वतों को देखते हो वो बना है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। वैज्ञानिकों के अनुसार अब भी हिमालय बढ़ रही है 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर हर साल, और करीब 10 लाख साल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आज हिमालय की चोटी है वो 10 लाख साल में 7 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचा होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ एट ए वेरी डेंजरस जोन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत को 4 भागों में सेस्मिक जोन्स में बांटा है: जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। और नॉर्थ ईस्ट खासकर अरुणाचल जोन 5 में आता है, जो कि सबसे ख़तरनाक इलाका है भारत में अर्थक्वेक को लेके। म्यांमार के जैसा 7.7 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है तो बहुत भयंकर तबाही मचेगी दोस्तों, खासकर अगर एपीसेंटर और फॉल्ट लाइन आबादी वाले इलाकों से गुजरता है तो, जो म्यांमार में भी हुआ है। सेस्मिक वेव जो है दोस्तों वो फॉल्ट लाइन से निकलता है। जिस तरह से हम बिना जांच पड़ताल किए, बिना सॉइल स्ट्रेंथ को जाने आरसीसी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं फटाफट पैसे बचा बचा कर, 7 के ऊपर का अर्थक्वेक दोस्तों यहाँ के स्ट्रक्चर्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और म्यांमार में जो हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। हालांकि भूकंप कब आएगी इसको कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है। और हम इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आपको पता होगा IS कोड के बारे। वैसे उसका रेफरेंस इतने लोग लेते नहीं है जोन 5 में होते हुए भी, लेकिन हमें दोबारा सोचना होगा इस बारे में, रेफ़र करना होगा। दोस्तों, कई सारे देशों ने इस दौरान म्यांमार को मदद भेजा है।
भारत से भी एनडीआरएफ की टीम वहाँ जा चुकी है। लगभग 15 टन की सप्लाई हमने भारत से भेजा है म्यांमार की मदद के लिए, लेकिन स्थिति इस हफ्ते और बिगड़ेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रही है। कई सारे दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया में उभर के आया है दोस्तों, जहां मलबे के नीचे से लोग आवाज़ दे रहे हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ है, लेकिन बचा नहीं पा रहे रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, मलबे के अंदर किस तरह है वो उसका पता नहीं, कितने टाइट स्पेस में वो मलबे के अंदर हिल भी पा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों कि मंजर वहाँ क्या होगा। And friends, Northeast needs to be cautious about the type of structures we are building, cautious about deforestation, because we have a lot of rivers flowing through our zone. And if any of these rivers gets blocked due to landslide during earthquake, the impact could be more devastating. I'll try to make a video about the types of tectonic plate movements and earthquake resistant structures in coming days, but I would like to say that we must always remember that we are in the zone 5, which is the most seismically active zone of India. The types of structures we are building, we must think twice about it. I know everybody has the right to create buildings, make their own life. People want to invest in real estate, make rooms for rent, draw money all their lives. But something like this that choked Myanmar is a possibility for Northeast too. We must stop deforestation, and we must build structures that can resist earthquakes to some extent. And where can we learn about earthquake resistance structure? Friends, it's the age of internet. You have all the blueprint of how an earthquake resistant structures can be built. And if not, we can look at Japan. Maybe some of our engineers from Northeast can go there, study their architecture, study their structures, and how Japan is able to cope with earthquakes. Because friends, as you are aware, Japan is also exactly like Northeast. Lots of seismic activity there, and people have found a way to build structures that can resist earthquakes. And of what I am observing, Northeast is in a very fast developing stage where everybody wants to build structures, but no one pays attention to detail. Take for example the buildings of Naharlagan and Nagar. Some of the buildings are in a very dangerous location, protruding out of cliffs which have loose soil. Some buildings are very close to the river, on the banks of rivers. Friends, we are lucky that we don't have much environmental calamities in Arunachal Pradesh, but we cannot say for sure what the future holds for us. Anytime there could be something tragic that the nature is planning, and we have to be very, very cautious in our next steps. I want to conclude this video by saying that if Myanmar had built earthquake resistant structures, or if there were not too many RCC structures in Sagaing, then there wouldn't be so much casualties. Most of the casualties have been from collapsing buildings, and we have to take note. Although we think that RCC structures last for a long time, maybe 50 years, but the risks are heavy. I'll leave you a question before I go. An earthquake of magnitude 7.7, exactly like Myanmar, hits Arunachal Pradesh. A man lives in a traditional changar, and another lives in a 4-storied building, and both the homes fall. Who will live and who will die? You answer me. I believe today is the age of studying and analyzing. It's the age of AI. We can go to other countries to study how the people are coping with environmental disasters, what they are doing to their environment. We must learn a lot, friends, instead of blindly following urbanization. I have a lot to say in this video, but I'll keep it short, and I'll make a video soon about earthquakes and other things related to seismic activities.
because we are living in zone 5 and what that means to our very survival. I'll make a video soon. But for now, that's all. Thank you very much, and let's pray for Myanmar.